invited him to come to Dwarka. So we are very fortunate, especially the Dwarka Vasis. We are very happy that a Brajvasi has come to our temple. Although apparently in Rahasashram he is actually a sannyasi, what I feel, through his sadhan and the way he deals with devotees as management. All glories to him and all glories to Sri Harinam. So Hare Krishna everyone. Thank you everyone. Thank you Rajesh Prabhu and all the devotees, wonderful devotees who are gathered here to listen to Harikatha, Harinam, so that some way or somehow we may attract the mercy of Krishna that we discussed in our last Japa talk, that we don't have to think that we are in control of Japa. We have to make sure that Harinam Prabhu is in control. So the topic which I have chosen today is how to transcend the subtle poison of I and mine. So we have already learned in many lectures and we have seen in Bhagavatam also that मैं और मेरा. We have heard a lot, but we often deal it in gross level. Somehow we miss the subtle aspects of this I and mine, and we tend to remain in ignorance due to that. So, for example, we say ना प्रभु मैं बहुत पतित हूँ या मैं अविद्या में गिरा हुआ हूँ या विद्या में मैं गिर गया. So there is one pastime where Srila Prabhupada's disciple, he approached Prabhupada and said, Prabhupada, I am the most fallen. And Prabhupada said, you are the most nothing. So most fallen में भी हमें most हमें अपने लिए ही लगाना है. So things like these come, they are very subtle, but by the mercy of Guru, Vaishnavas, Krishna, Harinam, Prabhu, we try to come out of it. So in today's Japa talk, we will try to dig out this subtle poison of I and mind, which is in definitely me. So we'll begin with the small Mangalacharana. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshur Unmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivas Adi Gaura Bhakta Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare कथांचन स्मृते यस्मिन् दुष्कृतं सुकृतं भवेत् विस्मृतं विपरीतं स्यात् श्री चैतन्य नमामितं. श्री गौरंग महाप्रभु की जय. उपस्थित वैष्णव भक्तवृंद की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. So the definition of aham and mama, it is explained in many features in many places in Srimad Bhagavatam. But the prime verse which Srila Prabhupada often quotes a lot in his lectures, letters, room conversations is Srimad Bhagavatam, Canto 5, Chapter 5, and verse number 8, where Bhagwan Rishabh Dev is actually giving instructions to his son. So the verse goes like, Pum saha striya mithuni bhavametam tayormito hridaya granthi maho ato griha kshetra sutapta vitte janasya moho yamaham mameti. So it says, Pumsa striya mithuni bhavametam. This whole creation, this material creation, it is all about the attraction between male and female only. This is the basic principle. And because of this, Tayor Miti Hridaya Granthi Mahor, because of that, there is a Hridaya Granthi. हमारे हृदय में ना गांठें पड़ गई हैं. So, for example, if there is a hole and you have to pass a rope out of it. So, if there are no knots, it can easily cross through. लेकिन अगर गांठें पड़ी हुई हैं, knots पड़ी हुई हैं, तो वो hole में अटक जाएगा. So, this is what we have so many knots in our heart, and the basis of the very root basis of that knot is the attraction between male and female, that is sex life itself, mithuni bhavametam. So what happened? Because of this hriday granthi, we become attached to how many things? Atah griha kshetra sut apt vittair. Body, home, property, children, relatives, and wealth. We are attached to so many things, etc., etc. And in this way, moh arises in our heart. We are very much attached. There is so much illusion. And the last line of the verse is Janasya moho yam aham mam iti. The- One increases their life's illusion and things in terms of I and mine only. Janasya moham. That 1%, or you can say complete world, whole material world is suffering, or they are having Hriday Granthi because of this.
I and mine only. So this is because of avidya, because this whole creation is based upon avidya. And Srimad Bhagavatam explains various factors of avidya, or you can say types of avidyas. So when the creation part of third canto comes, there are five types of avidya, or the five functions of avidya are explained. So it says sasarjagre, andhatamisram, athatamisram adikrit, mahamoham cha moham cha tamaschagnya vrittayah. So Brahmaji, who is the original creator, he produced five kinds of ignorance, or five functions of ignorance, you can say. So the first is tamas, moha, Mahamoha, Tamisra, and Andhatamisra. You must be thinking why we are discussing this. Because if you don't understand the problem, how we are going to find the solution? Or if we just have the solution, then we don't know how to apply the solution. So that's why we are discussing this functions of avidya. Because this is kind of a poison which is there in our heart and mind. And because of that poison, the nectar of holy name is showering upon us. But the poison of umbrella we are holding very high, and we are proud of it also. So we have to make sure this poisonous umbrella is closed, and we are just dripped in this rain of amrit of holy name. So we will discuss what are these five types of avidya. So first is tamas. That means the ignorance of swarupa of the jiva. For example, I am this body. This is actually tamas. I'm not talking about sattva, rajas, tamas. No, no, no. These are functions of avidya. So tamas, that is, you are ignorant of your own swarupa, who you are, who am I. When this is the problem, it is called the function of tamas. And from tamas, the verse is vrittayaha, means in sequence it goes. So first one is ignorant about his own swarupa. When one is ignorant about his own swarupa, then what happens? There are a lot of identification based on this false identity. For example, you say I am this body, and then from this body, many false identification starts. For example, I am a man, I am a woman, I am Indian, I am American, I am dog, I am cat, I am a flying eagle, I am good, I am bad, I am this, I am that. So many false identification begins. This is called moha. So from tamas, moha arises. Then what happens when one starts applying this moha, or we should not say applying, when one is encased in this moha, then mahamoha comes. So what is mahamoha? Means applying possessiveness to the objects of enjoyment. For example, this mango is mine. So from I, my comes. So this mango is mine, this car is mine, this house is mine, these children are mine, mine. So this is mahamo. So tamas is ignorance of swarupa, and from ignorance, false identification, and moha, and from moha, mahamo means false applying possessiveness over objects of enjoyment. All right. Now, once you are you're engaged in this mahamoha, then comes tamisra. Tamisra means when you have a very deep desire to enjoy an object, and you are not able to do that. Then comes anger within these mental functions. So this is called tamisra. The anger which is arisen when we are not able to enjoy something. That is Tamisra. So Tamas, Moha, Mahamoha, and Tamisra. And the last one, which is the unconsciousness state which is brought about by this anger. Or in other terms, death. This is called Andhatamisra. So death can be defined in many ways. In Bhagavad Gita, the Lord says, Dehantar. When the body is changed, that is called death. Because we don't die. That is for sure. We are soul and we don't die. So what dies? The body dies. So the Lord says in Gita, Dehantar praptir. When this deha anta, when this body dies and there is another body received. So this is called transmigration, and dehanta, the death of this body is called death. Oh, yeah, definitely. So tamas, moha, mahamoha, tamisra.
and andhatamis. So we are all covered in these five functions of avidya. Now, in Madhurya Kadamani, Vishwanath Chakravarti Thakur says different terms: avidya, asmita, raga, dvesh, abhinivesh. So, if one studies Patanjali Yoga Sutra, then he can understand that okay, Vishwanath Chakravarti Thakur has taken these terms. But Bhagavatam says tamas, moha, mahamoh, tamis, and tamis. So it is definitely confirmed that we are in this material world, and obviously we are not in this status Jivan Mukta Avastha, that Nikhilashu api Avasthasu Jivan Mukta. We are not Jivan Mukta. We are definitely Baddha Jivas. These five types of functions of ignorance are also disturbing us. And if we don't get out of these ignorance, then our goal, which is Krishna Prema, service, seva, that is very impossible to achieve. We are very sure about that. The scriptures are very sure about that. See, Manu Samhita says we don't have to blame even ourselves or others, or we don't have to condemn someone for this ignorance. Na mams bhakshane dosho, na madhve, na cha maithune, pravitteresha bhutanam nivrittistu mahaphala. That means it may be considered that meat eating, intoxication, or sex indulgence, these are actually natural propensities of a conditioned soul. If someone is in avidya and covered by these five functions of avidya, definitely he will do some kind of sin. Either he'll eat meat or do some intoxication or gambling, or he'll do illicit relations. Therefore, Manu Samhita says, do not condemn such people. Pravitti resha bhutana nivrittistu mahaphala. But one should also remember that unless one gives up such sinful activities, there is no possibility of achieving the actual perfection of life. So we are hankering for Krishna Seva, Krishna Nam, Krishna Prem, and avidya is disturbing. We cannot condemn this also. Then what should we do? That is the problem. So blaming oneself and definitely not others is not the solution. But the solution is nivrittistu mahaphala, that you have to give up. But what if the process of giving up is also poisoned by this avidya? Now this is a big problem. This chanting process is actually the divine process by which we can actually get out of this avidya. But the poison of I and my, if this enters into the process of chanting, we are doomed. आप सोचो कि आप बीमार हो, आपको कोई रोग लगा हुआ है और आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपको कोई मेडिसिन देते हैं, और वो मेडिसिन ही में एक ऐसा विष छुपा हुआ है जो आपको तो लग रहा है कि गोली तो मीठी है, खाने में अच्छी भी लग रही है, और नुकसान भी उतना होता हुआ कुछ दिख नहीं रहा, लग तो रहा है कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, बट व्हाट हैपेंस, हम एक्चुअली में गिरते जा रहे, 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 गिरते। तो ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए मैंने ये टॉपिक चुना था, बिकॉज इज ओनली भक्ति प्रिय भागवत महाराज एंड मेनी अदर सन्यासीज, दे आर मेनी अदर वेरी exalted devotees, they are continuously trying to hammer this कि इसको किसी तरह तोड़ना है, this ignorance big problem, and this functions of ignorance, they are entering into our japa also. Now I'll give you some examples so that we all can get out this subtle poison of I and mind that is even inside the japa. For example, we are in the temple hall and we have done nice Mangal Aarti with dancing, paid obeisances. Now it is the time to chant with devotees. And when you are near the Tulsi Maharani and you see, अरे मेरे बैठने वाली जगह पे तो कोई और बैठ गया है। ओ हो, ये क्या था अभी स्टेटमेंट? मेरे बैठने वाली जगह पे कोई और बैठ गया है। अब ये सोचने वाली बात है, मेरे बैठने वाली जगह, तो हमको सोचना चाहिए उस टाइम पे, वैसे आप सोच नहीं पाएंगे, क्या जहां हम बैठ रहे थे वो मेरी भजन कुटीर था, या वो मेरा साधना सिद्ध स्थान था जैसे गोस्वामी का था वृंदावन में, ऐसा कुछ था ऑफिशियली डिक्लेयर्ड बाय टेम्पल मैनेजमेंट, ये इस जगह पे एबीसीडी कृष्ण दास या एबीसीडी कृष्ण देवी दासी बैठती हैं, ऐसा कुछ तो था नहीं। अच्छा, फिर हम देखते हैं कि ओ उस जगह पे कोई और बैठ गया, तो फिर हम क्या सोचते हैं, उस व्यक्ति के बारे में सोचने लगते हैं जो उस जगह पे बैठा है। देखो कहाँ से कहाँ जाता है, सी हाउ दिस ऑफेंस। ये एक मेरा स्थान, माई, ये महामोह में आए, क्योंकि हमको लगता है कि हम उस स्थान पे बैठेंगे तो हमारा जपा अच्छा होगा। नाउ सी, पतंजलि योग सूत्र डस टॉक अबाउट स्थान सिद्धि,
कि आपको एक फिक्स स्थान होना चाहिए। अगर आप भगवत गीता देखेंगे तो भी आपको 4th चैप्टर 5th चैप्टर में भी आपको ये दिखाई देगा कि स्थान ना ज्यादा ऊपर ना ज्यादा नीचे, एक फिक्स, कैसे आपको स्किन बिछा करके कैसे आपको करना है, पूरा उसमें भगवान समझाते हैं। पर आप देखो यहाँ पर हम किसी अष्टांग योग की तो बात कर नहीं रहे, हम तो यहाँ पर भक्ति की बात कर रहे हैं। उसमें भी ये 2 मेथड्स होते हैं, एक होता है मुनि मेथड और एक होता है कृपा मेथड, जो हिज ग्रेस गोपी बाबू जो हमारे ब्रह्मचारी ट्रेनर थे वो समझाते हैं। मुनि मेथड एक्चुअली होता है डाउन टू अप, जिसमें हम प्रयास करते हैं कि सीधे बैठे, लाउड बोले, सुनने का प्रयास करें, गर्दन ना झुकाएं, आंखें खुली रखें, ये सब मुनि मेथड होते हैं जिसमें हम प्रयास करते हैं एसेंड होने का। और एक होता है कृपा, जिसको आप कहते हैं कि भैया मेरे जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसको हम एक्सेप्ट करके अब आगे बढ़ते हैं। दोनों ही यूजफुल हैं, वी शुड यूज बोथ। ऐसा नहीं कि इसको नकार दें उसको चल जाए, उसको नकार दें इसको बढ़ जाए। नो नो नो, वॉट एवर हेल्प्स जस्ट डू। जपा में कुछ भी जो आपको हेल्प करता है। सी, वी हैव सीन एंड वी हैव हर्ड मेनी लेक्चर्स ऑफ हिज ग्रेस बुरिजन महाराज, जो कि गोवर्धन रिट्रीट सेंटर में अक्सर रहते हैं। और महाराज बताते हैं, whenever he meets someone ना, he asks what inspires you in your japa। छोटे से बच्चे से भी पूछेंगे what inspires you in your japa, आपको क्या इंस्पायर करता है। even if someone says ना, प्रभु, the deities of radha madhav, when I see them ना I feel like chanting। अब जो व्यक्ति बोल रहा है उसका भले ही उतना इंटेंशन नहीं था, उसने ऐसे बना के बोल दिया, बट महाराज टेक्स इट वेरी सीरियसली। और अब वो जाएंगे, राधा माधव का फोटो खोलेंगे लैपटॉप पे, प्रार्थना करेंगे कि हे मुझे कृष्ण जपा करने में सहायता करें। तो इस तरह से, तो प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है कि अब जब उस स्थान से महामोह के कारण हमने उस स्थान को अपना मान लिया और वहां पर कोई और बैठ गया, तो मान लो कोई माता जी, वो सोचेंगी कि ये माता जी वैसे तो देखो आती नहीं है, महीने में 2-3 बार ही आती मंदिर, और उसमें भी आई हैं तो इसी जगह ही बैठना था इनको। तो देखो ऑफेंसेस बढ़ते जा रहे हैं, कहाँ कहाँ से जा रहा है हम। अब क्योंकि हमारा इंजॉयमेंट जो था, सोचो हम भोग वृत्ति रखे ना जपा में तो वो जो इंजॉयमेंट मेंटेलिटी था उस स्थान को लेकर के, अब उसमें जब प्रॉब्लम आ गया तो हम क्या हो गए, हम तामेश्वर में प्रवेश कर गए। ये मेंटल फंक्शंस में एंगर आने लग गया, जो भी आने लग गया, और बहुत सटल है ये, फील नहीं होता। इट इज लाइक ओ दिस वेरी नॉर्मल, कोई बात नहीं, बैठ गया। पर वो डिस्टर्ब करेगा कहीं ना कहीं। अगर हम एक्चुअली अलूफ है उससे तो बात अलग है। अच्छा, फिर इसका एक सोल्यूशन होना चाहिए। फर्स्ट, हम जहाँ जपा करने जाएं, पहले तो पूछ लेना चाहिए अगल बगल वालों से कि यहाँ कोई बैठा तो नहीं। दिस वेरी बेसिक वैष्णव एटिकेट, सो दैट वी डोंट डिस्टर्ब एनीवन। Even mentally, if we disturb someone, that is also kind of violence only. So this is very basic etiquette to ask, is someone sitting here? Can I sit here? It's not like कि हम सीधा अपना गद्दा फेंकते हैं, उसको पैर से सरकाते हैं और उसमें सीधा धम्म देना बैठ जाते हैं। Even some devotees, they throw that आसन so loudly कि अगल बगल कुछ लोग डर जरूर जाते हैं और देना उसको गिराएंगे, सब डर जाएंगे इधर उधर कि क्या हुआ, क्या किसने डाला, क्या हुआ, कैसे हुआ। फिर उसके बाद बैठता है, अच्छा अच्छा ये आए, कोई नहीं, बैठो बैठो बैठो। तो ये सब भी कुछ एटिकेट इश्यूज भी आ जाते हैं इसमें। तो अब और क्या होता है, कभी कभी देर इज प्राइड इन साधना ऑल्सो, that I always attend the morning program and I chant only in temple hall. I always sit near the Tulsi Maharani। अब ये जितना आए 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 करके अपनी साधना में लगा दिया है। द प्रॉब्लम इज when you are not able to attend morning program, when you are not able to chant in temple hall, and when you are not able to sit near Tulsi Maharani, what happens? The mind is disturbed। क्योंकि आप अपने स्थान से, साधना समय से, इन सब से इतने बुरी तरह मटीरियली अटैच हो गए। इफ यू आर स्पिरिचुअली अटैच, दैट इज फाइन। फॉर एग्जाम्पल, इज ओनली गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, 1 o'clock he'll get up, मंगल आरती जाना, एंड द सर्वेंट्स will say, महाराज अभी 1 बजा है महाराज। अच्छा अभी 1 ही बजा है। अच्छा, when did he take rest? 11 p.m. So in 2 hours only is awake। मंगल आरती जाना, मंगल आरती नहीं नहीं महाराज, अभी 4 बजे उठते महाराज, अभी कहाँ मंगल आरती। अच्छा ठीक है ठीक है, तो महाराज विल टेक रेस्ट अगेन, 1:45 अगेन, हाँ मंगल आरती जाना, मंगल आरती। महाराज सर्वेंट्स लाइक ना, महाराज 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 महाराज। तो ये तो आसक्ति भाव प्रेम की स्टेज है ना, ही कैन नॉट लीव दैट। तो दैट इज स्पिरिचुअल अटैचमेंट, बट देर इज मटीरियल अटैचमेंट ऑफ प्राइड। आई गो टू मंगल आरती डेली। For example, while seeing the deities, we have a fixed place of standing. What if someone else stands there? In festival, we are definitely disturbed. Janmashtami and Radhashtami, because of so many Shraddhalus coming. What we say?
बहुत भीड़ है आज. You see, the Shraddhalu, the devotees who have come across the world to see the deities, we call them bheed. We don't even say Shraddhalu. We say crowd. We don't even say devotees. है ना? So ये सब वर्डिंग्स में भी बहुत सारा अंतर आ जाता है. तो अब देखेंगे, इट इज सो सटल. कहेंगे प्रो जी आप ये क्या बताते जा रहे हो, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कभी जीवन में कुछ नहीं हो सकता. वी हैव टू फिल्टर ईच ग्रेन. ऐसा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, बट वी कैन ट्राई. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी आर चैंटिंग and suddenly someone comes and says, Prabhu, one Maharaj is coming and you have to go and buy garland. Can you please help me in that? Now you say, Prabhu, अभी जपा का समय है. जपा के समय में आपको ये सेवा याद आता है. Now it may be the very first time that devotee has approached you. Definitely we are chanting for what? To seeking seva. And when seva comes, we say, नहीं अभी ये है, नहीं अभी वो है, नहीं अभी वो है. His Holiness Radhanath Swami Maharaj ji says, Maharaj says ki when you are washing the pots, you should think, oh, out of millions and millions of birth of ants, hogs, dogs, stool eaters, worm, and eagles, bats, horses, cows, and so many human births also. Now I have got the chance to wash this pot. And what we are saying, Prabhu, इस सेवा में ना बड़ा मेहनत है, बहुत दिक्कत होता है. तो see, Maharaj is so subtle in his thinking. He is thinking about that mercy, but he is not blaming the services. See, it may happen in exceptional case that when you are chanting, some service may come. See, the scripture says when you are even worshipping the Lord, if a exalted Vaishnav is coming, you have to stop that worship, welcome the Vaishnav, and then continue the worship. That is the sthan of Vaishnavas. But here, what we are doing is we are actually rejecting the service also, and sometimes we are actually shouting also. And if we are not shouting, within our heart there is some corrosiveness. No, 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 कड़वाहट एक आ जाती है ना, जंक लग जाता है, रस्ट हो जाता है. So these type of things do enter in our heart. Now what if we are not able to chant? Then what we say, oh, I am not chanting nicely. Okay, so first we think, first of all, which I said in the last Japa talk also, in the beginning of this Japa talk also, Hari Nam is independent. He is not, he is in control. I am not in control. My dear Hari Nam Prabhu, please, 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 please manifest yourself. Please manifest yourself. I don't have any ability to chant. See, let's see the chanting process in very calculative way. Vak Shakti, this belongs to the Lord. All these senses, I am not Rishikesh. I may be Rishikesh Das, but Lord is Rishikesh. He is the master of senses. So whatever senses are used in chanting are vocal cords, lips, tongues, air. Okay, we have five kinds of air. So one air is used to speak also. Udan Vayu, I think. Udan Vayu. So all these belongs to Lord. Then who are we to say that I am doing this? This is my chanting, my purity of holy name. No, no, no. The Lord is in control. Because we are not able to dovetail all these things to the Lord, that is why that pride is still there in the process itself. Now understand few more things. Because of the sweet will of Nam Prabhu, only we are able to chant. There are so many people who are born mute. They are not able to speak. By great, great, great fortune, we are able to speak somehow by the mercy of Nam Prabhu only. And that too, the name Hare Krishna Mahamantra, we are able to speak. And then we are also in pride. So how will that work together? So there are various such kind of subtleties in which this poison of I and my it enters. Now there are definitely solutions. See, it may be that we may be good at some limbs of sadhana. For example, some may be very good in chanting, some may be very good in reading or explaining Gita, Bhagavad Granth ityadi. Some may be very good in Vaishnava Seva, some may be very good in cooking, some may be very good in preaching, some may be very good in driving. There are so many limbs in one may be very good. Some may have very good attachment to Tulsi Maharani. Some may have very good attachment to Narsingh Arti. That is there. But what you have to do is you have to pray that this mercy remains upon me, and
May Nam Prabhu or may Krishna give this mercy to everyone. I may not be the deserving candidate, but Yadrchaya, by some fortune, I have got this. I don't know how. This is your kripa, my dear Lord. So, this is the way of thinking. We have to give it to Krishna always, 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 always give it to Krishna. And this subtle poison, it will go by this only one activity, that is a Sharanagati. Now, since I have taken the word of Sharanagati, Srila Bhaktivinoda Thakur has written a book, Sharanagati, in which the six symptoms of Sharanagati are explained by various bhajan. So, the solution of Atma Nivedana, my Lord, nothing belongs to me, everything belongs to you, including this I and mine. So, there is a very nice bhajan which I'll sing and immediately explain, and then we'll wrap it up. So, Aham Mama Shabda Arthe Yaha Kechu Hai Arpelu Tumhara Pada. O Hoy Dayamay. O Dayamay, O merciful Lord. Aham Mama, see I and mine, Shabda Arthe Yaha Kichu Hai. Arpilu Tumhara Pade. I have surrendered all that is meant by these words of I and my. I am surrendering at your divine lotus feet. O Dayamay, I am surrendering it to you. আমার আমিতে না থা নাহি রাহিনো আর এখানে হইনো আমি केवल तुम्हार ओ लॉर्ड आई नो लॉन्गर रिमेन माइन मैं अपना भी नहीं हूं एखानो हाइनो आमी केवल तुम्हार नाउ आई एम योर्स एक्सक्लूसिवली केवल तुम्हार आमी शब्द देही जीव आत्मा छाडिला त्वदीयाभिमान आईजी हृदय पाशिला Ami Shabda Dehi Jiva Ahamatma Chadila. Now I'm embodying all this false egoism of I means souls and my means possessiveness. I'm just Chadila. I'm सब कुछ छोड़ रहा हूं मैं भगवान. And Twaddiya Abhimana Aji Hridaya Pashila. Today, this ego of saying I am yours, your own has entered my heart. मैं आपका हूं. See, भक्ति के कई स्तर होते हैं in which the आत्मिका Mamatvam. Jeev Goswami says, yes, Mamatva. His only Saldar Swami Maharaj also says a lot about this Mamatva. Mere Bhagavan, mere Vaishnav Jan, है ना? This my is actually true ego. So he says, Tvadiya Abhiman, Aji. See, Abhiman is also here, but true ego. हमारा सर्वस्य देह गेह अनुचर हाय बंधु दारा सुत द्रव्य द्वारा घरा शेषाब हाइला तभी आमी हैनु दास तुम्हारा गृहेते एबे आमी करीवास वॉट एवर आई हैव कंसिडर्ड माइन वॉट भाई बंधु दारा सुत द्रव्य द्वारा घरा बॉडी होम सर्वेंट्स ब्रदर्स फ्रेंड्स वाइफ चिल्ड्रन पर्सनल बिलोंगिंग्स हाउस होल्ड इट हैज नाउ बिकम योर्स तुम्हारा गृहीते एबे आमी करी वास नाउ आई हैव बिकम योर सर्वेंट नाउ आई विल रिसाइड इन योर हाउस ओनली मैं तो अपने घर में भी नहीं रहने वाला सो दिस इज द मेंटालिटी ऑफ शिला भक्ति विनोद ठाकुर हु इज ट्राइंग टू गिव इट टू अस तुमी गृह स्वामी सो अब हम उनके घर तो चले गए भगवान के है ना अब घर चले गए तो फिर वहां पर अब स्वामी वाला काम करेंगे नो 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 वी आर सर्वेंट वी सेड आई हैव बिकम योर सर्वेंट आमी हाइनु दास और तुम्हारे गृह थे आमी करी वास एज अ सर्वेंट आई एम एंटरिंग योर हाउस तुमी गृह स्वामी आमी सेवक तुम्हारा ही इटरेटिंग इट कि आप ही इस घर के स्वामी हैं और मैं सेवक हूं आपका तुम्हारा सुख ही ते चेष्टा एक ना हमारा ऑल माय एंडेवर्स आर नाउ फॉर योर सेटिस्फैक्शन ओनली ये जपा में रस ढूंढने के पीछे नहीं जाना चाहिए जपा में एक ही भावना होनी चाहिए कि ये सेवा है मेरे गुरु और गौरांग के प्रति बस नथिंग एल्स स्थूललिंग देह मोर सुकृत दुष्कृत आर मोर नाही प्रभु आमी तो निष्कृत दुष्कृत निष्कृत सुकृत तीनों शब्द का यूज हो रहा है कि जितने भी मैंने दुष्कृत या सुकृत पायस डीड्स और इम्पायस डीड्स आई हैव परफॉर्म्ड कैसे स्थूल लिंग देह वॉट एवर आई हैव परफॉर्म्ड वेदर इट इज गुड और बैड बाय दिस ग्रॉस एंड सटल बॉडीज आर मोरा नाहे नो लॉन्गर बिलोंग्स टू मी जैसे इन द बिगिनिंग ऑफ लेक्चर राजेश प्रभु वाज ग्लोरीफाइंग सेइंग आई हैव डन दिस डिग्री दैट डिग्री ये यूनिवर्सिटी सी दैट इज फॉर्मेलिटी बट दिस इज ऑल नो लॉन्गर माइन बाबा हो गया वो अब गया गया आमिता निष्कृता नाउ आई एम फ्री माय डियर लॉर्ड दिस इज रियल फ्रीडम अब इंडिपेंडेंस डे गया ना रियल फ्रीडम ये है नाउ द लास्ट वर्स इज वेरी ब्यूटीफुल तुम्हारा इच्छा ये मोरा इच्छा या मिशाइला
भक्ति विनोद आज आपने बोलैया. My desires have merged with your desires. Today, this Bhakti Vinod has forgotten himself. ये है real forgetfulness. See, Yog Maya and Mahamaya, they both are having the power of forgetfulness. So, what does Mahamaya do? The Mahamaya makes sure that the Jeev forgets the Lord. And what does Yogamaya do? The Yogamaya makes sure that the Siddha Jiva forgets everything about this material world and only remembers the Lord. So this is the actual prayojan in chanting, in reading, in hearing, in serving, even while offering jal to Tulsi Maharani. We have to make sure that the seniors are accommodated first. You know what happened? I have this habit of uh, remembering verses. I really like memorizing verses. So in Tulsi Puja, I was very much distracted by the Tulsi Aarti. See how I am distracted. This is some different kind of distraction. Now I am memorizing a verse because कोई श्लोक आप याद करो, पद्य याद करो, फिर थर्ड लाइन या सेकंड लाइन कुछ याद नहीं आता ना तो डिस्टर्ब हो जाता है कि क्या था वो केवल 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 कवलई कुछ तो वर्ड था वो याद ही नहीं आ रहा. Now I am stuck in that loop. And suddenly I heard Yani Kani Chapa Pani. And immediately I started going towards Tulsi Maharani. And I was the first person. At that time, I was very new, wearing white. I was initiated. Okay, I was initiated that time. And I offered Jal to Tulsi Maharani. And I was in my own world because I am remembering that verse. And I took the parikrama and I just came back, offered my obeisances again to Srila Prabhupada. And I stood at the back of the temple next to Prabhupada and I was just focusing कि मोबाइल नहीं देखना है, बस वो वर्ष याद करना. मोबाइल देख लिया तो चीटिंग हो जाएगी. याद करना. And suddenly His Grace Amog Lila Prabhu came to me and said, Prabhu, please make sure the seniors have the chance to offer jal first. And I was like, हैं, ये कुछ हुआ क्या मेरे से? एंड कुछ कुछ किया है मैंने, कुछ तो गड़बड़ किया है वरना ऐसे करेक्शन नहीं आता है. सो आई इमीडिएटली वेंट अप टू द रिकॉर्डिंग स्टूडियो और उसके बाद मैंने कहा भाई एपी रिवाइंड मार जल्दी मेरे को, बिकॉज आई वाज इन मीडिया ना तो आई हैड एक्सेस टू स्टूडियो से इसको रिवाइंड करो. और उसके बाद मैंने देखा आई वाज सो अशेम्ड ऑफ माई कि आई वेंट एंड आई मतलब सोचो ना टेम्पल वाइस प्रेसिडेंट कमांडर सब खड़े हुए और ये एक नया लड़का अभी व्हाइट में ही है, नया आया है अभी. और वो सीधा जा करके अमोक लिया वो बगल से जा रहे थे, मैं उनसे पहले जा करके पूरा ये 3 ड्रॉप मार के ये बवंडर की तरह घूम के किनारे खड़े हो गए थे. तो यही होता है व्हेन वी आर नॉट कॉन्शियस. ये क्या होता है हम कहीं ये देखो ये पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शन है बट स्टिल इट इज अ डिस्ट्रैक्शन. इन चैंटिंग ऑल्सो दिस कम्स, इट इज कॉल्ड रसा स्वाद. when you are chanting and suddenly you feel like यार आज 4 माला बिना डिस्ट्रैक्शन के हो गए. and then comes the fifth माला, जय राम जी की, पूरा गया. So a distraction is a distraction, whether positive or negative. Make sure we are not distracted, and holy name is just entering our ears. And if we are not able to hear, we have to pray. रो दो भाई, अब कुछ बचा नहीं हमारे पास करने को. That is आत्मनिवेदन, which भक्ति विनोद ठाकुर saying. Even I have forgotten myself. भगवान अब तो आपका ही है, अब आप ही पालो, आप ही करो, सब कुछ करो. So we'll end this Java talk here by this. Thank you, everyone. Sorry, I took 7 minutes more. I'm really sorry. Just went with the flow. Maybe distracting. Thank you, Rajesh. Over to you. Hare Krishna. Thank you very much, Prabhuji, for such a nice, wonderful Japa talk. We enjoyed every second of it, and we thought maybe it can be like in half an hour more, so that we can hear more from you. Like we felt. Yeah. This avidya, Prabhuji, like you nicely explained, there are 5 types of or 5 functions of avidya. And then many times we may not be very cautious about it, and then these thoughts may simply flow in onto our mind, and actually they are all kind of offensive, and then they may hinder us from progressing in bhakti. So you nicely explained, Prabhuji, so that we are conscious of such offenses and will try to avoid such offenses by having good practice and association with wonderful devotees. Yeah. Thank you so much, Prabhuji, for such a wonderful talk. Thank you. Now the floor is open for questions. If anyone has any questions, they can unmute themselves and ask, or
they can put their questions in the chat window. Hare Krishna Prabhuji, and but Pranam. No, Uh, Pranam Vidyapati Bhoji. when you stopped the talk, we just came out. What happened? We are so indulged in the talk. Thank you, Prabhuji. You have pointed very common points, and we say that जन्माष्टमी में बहुत भीड़ है, तो this kind of offenses we are doing common. So thank you for pointing out that aparadhas, and we will try to not do that. Thank you again, Prabhuji, for your nice Japa talk. Thank you. Actually, these offenses I have done. So I remember it very clearly. Thank you. Thank you for your words of wisdom, Prabhuji. I see the hand of Shobha Mataji. Shobha Mataji, Raj. Shobha Mataji, please go ahead. Prabhuji, Dandavat pranams. Prabhuji, the session was so amazing that it was a feeling that it should not stop at all, because there were some such subtle things that I never understood that these will give me. But like you said, Prabhuji, that attachment to the vigrahas, or attachment to like my bead bag, so that is transcendental. That does not come into material attachments, isn't it, Prabhuji? Yes, yes, yes. The attachment to deities is definitely, but to see those deities, the position where we stand to see those deities, that attachment is not good. Yeah, Prabhuji, but sometimes it is like I feel that I do japa very nicely and attentively when I'm sitting at this particular place. And if I'm removed from that place, then I get disturbed. So that is again the things which you described. It comes under that only, na, Prabhuji? Yes, It's yes. wrong. So then the name of our society will be International Society for Sthan Siddhi Consciousness. So there is one more thing. While chanting, for example, I have this bead bag. While chanting, something comes. So we have to do that. Then what we do is we take the bead like this. है ना, ऐसे छोड़ देते हैं. Actually, we should not show our beads. Anyway, so beads को हम ऐसे बाहर निकाल के छोड़ देते हैं कि जब वो सेवा हो जाएगी दोबारा इसको हम पकड़ लेंगे. या for 15 minutes or 20 minutes we have some kind of service and then we have to come back for our japa, and that those 50-20 minutes our hand will be like this only. We are stuck in that round. Why? Because we have changed the name of our institution to International Society for Round Consciousness. So what happens is we are removing Krishna from that process. अरे मान लो इसको ऐसे देखो ना कि अगर मैं ये आधा माला छोड़ देता हूं तो नुकसान क्या होगा और फायदा क्या होगा. अब इसको फायदा देखो. फायदा ये होगा कि आज मैं आधा माला ज्यादा करूंगा. टुडे वुड बी 16 इन द हाफ राउंड्स, है ना, या 16.76, 16.99 राउंड. हो सकता है दो ही बचाओ. कभी कभी ऐसा होता है, बट होता है क्या ना, वी आर अटैच टू द राउंड नॉट टू द नेम. So we have to be attached to the name. If yes, there is a good feeling that when we are sitting at a particular place, I am able to chant. So उसमें बहुत सारी चीजें हैं. When I am sitting in a good place, that place is good. Who decided that? Third, I am able to chant. All these three are very subtle poison. So what you have to do is you have to be very humble. विनीत भाव से कहना है, हे प्रभु मुझे ऐसा लगता था. इसमें भी अपना दैन्यता प्रकट करनी चाहिए कि हे प्रभु मुझे ऐसा लगता था कि शायद उस स्थान में बैठ करके मैं जपा अच्छा कर पाता था, हालांकि आप ही की कृपा थी. बट प्रभु आज कोई और वैष्णव या वैष्णवी वहां बैठे हुए हैं, तो प्रभु इन जो बचे स्थान हैं उसमें मैं बैठ जाता हूँ कहीं भी, आप मेरी सहायता कर देना. आज मैं तुलसी महारानी की कृपा के थोड़ा ऐसे डिस्टेंस में थोड़ा दूर बैठ पा रही हूँ या बैठ पा रहा हूँ. आज मैं ऑल्टर के एरिया से थोड़ा दूर बैठ पा रहा हूँ. मैं बड़ा निकृष्ट हूँ. मुझे लगता है ऐसा कि शायद पास बैठने से अच्छा जपा होगा. आज दूर बैठ जा रहा हूँ, कृपया करके आज सहायता कर दीजिए, मैं थोड़ा डरा हुआ हूँ. ये जो दैन्य आत्मनिवेदन दैन्यता का भाव होता है ना, ये भगवान को बहुत पसंद आता है. तो इसमें रहता है कि अरे यार ये तो बड़ा बड़ा अच्छा बच्चा है ये. भगवान सोचते हैं ये कौन सा सॉन्ग है, वैष्णव सॉन्ग याद नहीं आ रहा, उसमें भगवान का वो समझाते हैं नरोत्तम दास ठाकुर कि भगवान को ऐसा लगता है कि अरे इतना दीन है, इतना सरल बच्चा है ये ऐसा सोचता है. नहीं 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 नहीं, कोई चिंता मत करो, मैं साथ में हूँ. भगवान ऐसा हेल्प करते हैं फिर. सो दीन दैन्यता का भाव नहीं छोड़ेंगे तो चीजों को अच्छे से देख पाएंगे. ये Thank you, Prabhuji, for the guidance. Hare Krishna, Prabhuji. Thank you.
Thank you. There are few comments also, Prabhuji. Quickly, I will read. Ramesh Gupta Prabhuji told, Hare Krishna Prabhuji, Dandavat Pranam. Prabhuji, I am blessed to listen to wonderful talk. It's very inspiring and will be helpful. And Sudha Kumar Mataji, Hare Krishna Prabhu, Dandavat Pranam. Thank you so much for this wonderful Japa talk. I identified with this so much because these subtle thoughts keep steering my mind away during bhakti. These thoughts are very offensive, but I am not mindful of them. Thank you for pointing out. Prabhu. Hare Krishna. Rajesh bro, one thing. I identified with this so much because these subtle thoughts keep steering my mind away during bhakti. This is a great realization actually. Because what happens is these subtleties, they actually steer our mind away. And what else is it? These thoughts are very offensive. No, they are not, don't be too hatash and nirash. They are very offensive. This is also the mind is steering you away like, "Hey, इतना गलत करती थी तू." ये भी माइंड परेशान करेगा, ध्यान रखना. इट लाइक जस्ट इमीडिएटली ड्रॉप दिस, ये सब गलती होती है, छोड़ो छोड़ो, अब नहीं करना भैया, भगवान मदद करो. तो ऐसे उधर उधर ही जाना है. मेक श्योर ये भी स्टीयर अवे ना कर दे. बहुत सटल है, बहुत डिफिकल्ट भी. सी आई एम ऑल्सो स्टक इन दिस ओनली. आई एम ओनली स्पीकिंग मुख्य बोली, एज गोर गोविंद स्वामी महाराज said, मुख्य बोली. आई एम जस्ट सेइंग फ्रॉम माय हार्ट. आई नो व्हाट हैपेंस इन माय हार्ट. So I'm just praying to the lotus feet of all you Vaishnavas, please bless me. I don't want to enter into another birth. अभी और नहीं जाना है एक वूम में भाई, निकलना है यहाँ से. आप लोग आशीर्वाद देंगे तो हो पाएगा. थैंक यू. Hare Krishna, Thank you, Prabhuji. Prabhuji. Can I Yes. ask one question? यस मैम. Prabhuji, I wake up around 4:30 or 5 p.m. So sometimes it 5 p.m. happens like, no, माता जी. it's like 4:30, and all day like I'm taking classes also going on. But sometimes I feel I need some kripa, Guru kripa. So it's like still I'm waiting that when I will wake up around 3:30 or something. So how I will get this? I mean, sometimes I feel when I will get the kripa. See, I'll tell you first my own example. In our brahmachari ashram, like Amog Lila Prabhu, even if he comes around 1 a.m., yeah, yesterday he came around 1 or 2 a.m. He woke up around 4 a.m. and he was going into every room of ashram to see who else who is still sleeping. And he'll wake everyone up. And very nicely he'll wake up. So Sang definitely helps. But in house, if there is someone who wakes up very early, we have to pray to his lotus feet. Kindly help me. Now there can be some material solutions also. You can download that Alarmy app. That Alarmy app is very useful. You cannot snooze that alarm very easily. उसमें ना कुछ मैथमेटिकल क्वेश्चन आ जाएगा, जब तक उसको सॉल्व करेंगे तब तक नींद खुल ही जाता है, वो बचता ही रहेगा, बचता ही रहेगा, बचता ही रहेगा. दूसरा क्या रहता है, आ, जो बिस्तर है ना उसमें बहुत तमस भर जाता है. सो किसी तरह उस बिस्तर को छोड़ने का प्रयास करना है. और मोबाइल जो है ना वो रीच के थोड़ा सा आगे होना चाहिए ताकि उठ सके. इसके अलावा और आप क्या कर सकते हैं, उठना इज नॉट इन सतोगुण. इस गोपी बाबू बता रहे थे, हमको लगता है उठना सतोगुण में, टाइम से सोना सतोगुण में. ये रियलिटी है. अगर हम टाइम से सोएंगे, मैं आपको बताता हूँ, मैं एक बार बहुत थका था, 7 p.m. के अराउंड गौर आरती करके जब वापस आया, उस लाइक अभी मेरे को खाना भी नहीं है, जो भी है दूध रखा था नहीं पीना, मैंने कहा भाई किसी को दे दो. आई स्लेप्ट अराउंड 7:40. और उसके बाद 3 बजे के बाद तो शरीर दुखने लगता है, इतना ज्यादा बेड पे लेटा नहीं जाता. तो 3 बजे उठ करके फिर होगा खुद ही जाओ और नहाने, वो कितना सोएंगे. तो नेचुरली फिर वो पेट साफ करना, वो सब नेचुरल, सब प्रेशर सब आ जाता है अगर अच्छी स्लीप होती है. तो हर किसी का शरीर अलग अलग है, हेल्थ के इश्यूज अलग अलग हैं, तो उस हिसाब से देखना पड़ेगा. अगर कोई व्यक्ति का देह सत्वगुण में है तो 6 to 6.5 hours इनफ है उसके लिए, विदाउट एनी डे रेस्ट, डिपेंडिंग वट हाउ मच ही इज एक्सर्टिंग हिज बॉडी. और अगर कोई रजस में है तो 7 से 8 घंटा लगेगा, कोई तमस में है तो 10 घंटे के ऊपर भी नींद उसको कम लगेगी. वो सोएगा ही सोएगा. कोई डिप्रेस्ड रहता है वो बहुत सोता है, और वो खाता भी बहुत है, वो सोता भी बहुत है, लेकिन वो एक्सटर्नली वो हंसेगा लेकिन ही इज डिप्रेस्ड, ऐसा भी होता है. तो हमको ना थोड़ा अपना बॉडी को थोड़ा सा समझना चाहिए कि ये शरीर इतना बर्बाद है, इतना प्रॉब्लम है, थोड़ा इसको देख लेते हैं ताकि उस हिसाब से मैं अपना साधन को, समय सारणी को ठीक कर पाऊँ, शेड्यूल को ठीक कर पाऊँ.
तो इस हिसाब से हमें चलना चाहिए। तो देखिए आपको कौन हेल्प कर सकता है। हमारे आईएमएफ में हमने एक ट्रिक यूज की थी कि हमने पहले पता किया कौन कितने बजे उठता है। तो जितने भी लोग 3 बजे के पहले वाले थे उनको लीडर बनाया। ठीक है। उन वो फोन करेंगे उठते ही अपने अंडर के 4-5 लोगों को, फिर वो फोन करेंगे उसके नीचे वालों को, और ऊपर वाला इंश्योर करेगा कि ये सारे उठ रहे हैं कि नहीं उठ रहे हैं। तो इस तरह से वो चलता था। और फिर एक तरीका हमने लिखा कि हमने 4 AM पे ही भगवत गीता की क्लास स्टार्ट कर दी। भगवत गीता रीडिंग एट 4 AM। तो उसमें फिर जो नहीं आता था वो पता ही चली जाता था कि भाई साहब ये तो सोते रह के लग रहा है आज, है ना। कैमरा ऑन करने को नहीं बोलते थे हम उसमें। लेटे लेटे ही सुनो, लेकिन सुनो, और हर किसी से कुछ ना कुछ रीड करवाते थे। जैसे फॉर एग्जांपल आई एम रीडिंग इट और मैं अचानक से कह दूंगा कि राजेश प्रभु नाउ यू रीड, अचानक से। अब पता चला राजेश प्रभु सो रहे हैं तो कहेंगे राजेश प्रभु, राजेश प्रभु, अरे बोल राजेश प्रभु। पता चल जाता था कि वहां पे समाधि लग चुकी है इस तरह से। सॉरी राजेश प्रभु, जस्ट एग्जाम्पल है। सो इस तरह से भी चीजें हमने की थी। आप देखो, आप आपस के अपने सुहृद वैष्णव जो भी हैं आपके अगल बगल, वो कैसे आपको हेल्प करने के लिए सब तैयार हैं, आपको हेल्प मांगनी पड़ेगी बस। थैंक यू। Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. राजेश प्रभु, आई सी नो मोर क्वेश्चंस। Okay, Prabhuji, I think we can wrap up the session. Yeah. Thank you very much, Prabhuji. His Grace Shant Gopinath prabhuji ki jai. जय 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 दंडवत थैंक यू प्रणाम। प्रभु जी हरे प्रभु जी कृष्णा दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम टू हरे एवरीवन। कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद हरे प्रणाम। राम प्रभु, कृष्णा प्रभु जी दंडवत जय प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम।